अलंकार. अलंकार इज अ पैटर्न. जैसे अभी हमने ये जस्ट एक मॉर्निंग ट्यून बजाया जिसमें बहुत सारी पैटर्न्स हमने बजाई. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल व्हेन वी बिगेन द नोट्स इट वाज while we are playing different notes it has a pattern. Pa sa da pa da re sa ga re sa re ta pa da pa ga pa sa da pa da re sa da sa. So that's the pattern. Now pattern of swara is played to first of all to improve your fingerings, so that if you are a beginner your fingers needs to get comfortable with different patterns so that you get that kind of flexibility. Secondly, alankar is also used in different playing. If you're playing certain songs it helps you understand. For example, in this case it is part of the playing itself. Or if you are playing improvisation in classical, then a lot of these alankars also help you in improvisation. So if I were to put it in a very simple language, first of all, alankara is like a pattern. If you play simple 2-3 swara alankara, it is this is a pattern. Now, what we're going to learn today is how to practice an alankara. That's the first thing that I'm going to talk about. Then I'm going to talk about, second thing is, how long should you practice an alankara? And then the third is how you can create unlimited alankara. And also by the end of today's session, I'm going to give you a tool. You can just download that tool from the description and you can create your own alankaras. Okay. So first thing is how to practice an alankara. So let's take an alankara which we just played, okay, 3 swara alankara. Now, any alankara that you try to play, first you need to be able to sing the notations. So for example, if you are playing 3 swara alankara and if you are starting from the lower octave pa, so you have to first sing. It is pa dha ni sa re ga ma pa da ni sa, and you can sing up to ta sab tak pa. Okay, even if you can't reach so comfortably, it's okay, you can just lower your pitch and you can sing. Important thing is that you sing, because initially what will happen is when you are trying to sing, mostly you will end up missing some notes. And that is the first stage, that you sing slowly to get the stage where you can actually remember and observe that whether you are singing is right or wrong. That's the step one. So how to practice an alankara? First you have to sing the notations of 3 swara alankara or 4 swara alankara, whichever alankara that you are taking. The second stage is once you sing aroha and avroha, then you can try and play it very slowly. Once you complete your basic singing, just to understand what all notes you have to play for that alankara, the second stage is that you play it very slowly so that you get the confidence that whatever notes that you just sang, you are able to play that. Please remember, all the beginners, that at this stage you have to keep your speed very low, because your fingers will run faster than your mind can catch. So if you play it fast, you will not realize where you are making mistake, especially if you are trying to learn on your own or looking at some videos like these. Nobody is there to monitor you. So you have to monitor yourself, and you can do that by playing it slowly. Because when you play slow, you can observe what notes are you playing. So play it at a speed where you can see your speed of playing, where you can observe the notations in your mind. You have to follow that speed. Once you play the speed couple of times, then you are at a stage where
You know that okay, your bass notations are fine, what you are singing you are able to play it. Now once your bass line is fine, then you can try to achieve the next milestone of how you can play at least the aroha in one breath. So now we will play the same three swar alankara in aroha in one breath. It may happen that your breathing may get over here. No problem. You start again. Try to do as much as possible. It may happen that initially you can just do 3-4 parts, then you may be able to do 5-6 parts. Maybe after some time you can do almost 80% of it, and maybe you take 1 or 2 days to reach the entire aroha. It's okay, but the method is the same. Okay, so let's try and play this entire aroha in one breath. Now one tip, all the people who are beginners, just observe very slowly. When you reach mappa, most of the time you will end up cutting your blow. You may feel that you are not cutting it, but I have observed that people subconsciously they end up cutting their blow when they play mappa transition. And if you are doing that, try all the more to try and observe that you don't cut your blow when you are playing ma to pa. Okay, so now you played the entire aroha in one breath. Try to do the same thing in avroha, where you are going from higher octave pa to lower octave pa. So here almost I played the entire, and towards the end I finished my blowing. So I took another breath and I completed that. But the कोशिश ये करनी है कि you play both aroha in one breath and then avroha in one breath. The second tip that I want to give here is that when you reach higher octave, at that time you keep your tar saptak pa, where you open this first finger completely and you play it. If you close this hole like this and try to play a higher octave pa, it will not have clarity. So only for tar saptak pa, only for that you have to close 5 holes and then play this. Okay, once you play aroha and avroha, then you have to try and play aroha and avroha both in one breath. Let's try and play that. So I played the entire aroha avroha in one breath. Now try to play 2 cycles of aroha avroha if possible. Okay, or you keep playing till you get to that stage. So how can you play 2 cycles? Two cycle aroha avroha. Now here the कोशिश ये नहीं करनी है कि हम कितना फास्ट बजा सकते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि हम कितना सही बजा सकते हैं, कितना एक ब्रेथ में लंबा बजा सकते हैं. The more you try and play with this attitude, your playing will be qualitatively much better and you will be able to play much longer, and speed will come naturally as you keep playing more and as you keep pushing more towards playing more in one breath. So हमेशा याद रखना है कि हमें कभी कोशिश ये नहीं करनी होती है कि हम कितना फास्ट बजा सक रहे हैं, हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम कितना ज़्यादा बजा सकते हैं एक ब्रेथ के अंदर. और एक जो सवाल होता है कि हमें कब तक प्रैक्टिस करनी है एक अलंकार की, हाउ मच.
नाउ इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि यही अलंकार यहां तक बच सकता है। थ्री एंड हाफ। सो ये यहां तक बजाने के लिए जब तक आपका कुछ साल नहीं हो जाएगा, जब तक यू कैन नॉट रीच अ प्लेस लाइक दिस। सो कोशिश ये करनी है कि हम अलग अलग अलंकार एटलीस्ट एक ब्रेथ में आरोह अवरोह तो बजा सकें, और फिर हम दूसरे अलंकार की तरफ जाए कि अच्छा अभी 3 स्वर हम एक ब्रेथ में आरोह अवरोह बजा सक रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो टू सेकंड 4 स्वर अलंकारा एंड ट्राई टू प्ले दैट इन one aroha, one avroha in one breath. When you play different alankaras like these, where at least the aroha and avroha you are able to play comfortably, at least that should be the minimum time till which you should be able to play one alankara. तो पहले मैंने बताया अलंकारा हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम गाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको स्लोली बजाते हैं सो दैट वी नो व्हाट वी आर प्लेइंग। तीसरी बात, हम एक बार उसको एक ब्रेथ में आरोहा बजाने की कोशिश करते हैं, और फिर एक ब्रेथ में अवरोहा, और फिर एक ब्रेथ में आरोहा और अवरोहा, और एक बार वो पूरा हो गया उसके बाद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम एक ब्रेथ में कितनी ज़्यादा साइकिल हम बजा सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक अलंकार करें। ज़रूरी ये नहीं है कि हम आज 1 घंटा बैठ रहे हैं और हम एक साथ 50 अलंकार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप वो एक अलंकार कितना अच्छे से बजा सकते हो, और आप कितने अपने आप को पुश कर सकते हो बाय प्लेइंग इट क्वालिटेटिवली, बाय प्लेइंग इट इन वन ब्रेथ लॉन्गर। तो ये हो गया हम कैसे बजा सकते हैं एक अलंकार। और मैंने बताया कि आप कब तक बजा सकते हो, जब तक आप एक अलंकार आरोह अवरोह में एटलीस्ट एक ब्रेथ में एटलीस्ट एक आरोह और एक अवरोह नहीं बजा सकते हो, तब तक आप एक अलंकार को प्रैक्टिस करते रहिए। हमेशा पहले गाइए फिर बजाइए। अभी आते हैं उस चीज़ पर जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अनलिमिटेड अलंकार बना सकते हो। नाउ अनलिमिटेड अलंकार बनाने के लिए पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि अलंकार बनते कैसे हैं। सो एक बार हमें वो पैटर्न पता चल गई तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी। सो अगर आप हमारी स्क्रीन देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 ऑक्टेव होते हैं बजाने में। एक होता है लोअर ऑक्टेव विच इज़ द मंद्र सप्तक, देन मध्य सप्तक विच इज़ द मिडिल ऑक्टेव, एंड देन द हायर ऑक्टेव विच इज़ द तार सप्तक। नाउ जो मिडिल ऑक्टेव जो होता है उसमें कोई ऊपर या नीचे कोई निशानी नहीं होती है, बट अगर मध्य सप्तक हो तो वहाँ पे नीचे डॉट होता है, और तार सप्तक में हम ऊपर डॉट देते हैं। सो जो हम असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं, जो मंद्र प से लेके तार सप्तक प में जो हम लिखते हैं प ध नी सा रे ग म प ध नी, और फिर तार सप्तक सा रे ग म प, इसको हम आरोह कहते हैं। और अवरोह इज प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प, इसको हम अवरोह कहते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने हर नोट के ऊपर एक रैंकिंग डाली हुई है। तो लेट्स गो टू अलंकार्स। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिमिलरली यहाँ पे भी प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प। अभी जब हम पैटर्न की बात करते हैं, सो लेट्स लुक एट व्हाट इज द पैटर्न। नाउ लेट्स टेक इफ आई टॉक अबाउट अ 3 स्वरा पैटर्न, सिंपल 3 स्वर अलंकारा। तो यहाँ पे मैंने आरोहा की एक पैटर्न लिखी हुई है कि 1 2 3। अगर 1 2 3 इज अ पैटर्न तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10 9 10 11 अप टू कहाँ तक, एटलीस्ट 15 तक तो हमारे पास होने चाहिए। और इसी पैटर्न को अगर हम स्वरों में डालें, जो हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसी को अगर हम प ध नी सा नी सा रे, अगर हम इस तरीके से उसको आरोह में लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। इस फाइल में मैंने
ऐसे पैटर्न बनाई हुई है कि अगर आप 1 2 3 यहाँ पे लिखोगे तो उसके हिसाब से आरोह भी बन जाएंगे और अवरोह भी बन जाएंगे. सो वैसा ही अवरोह, प ध नि सा रे, ये आरोह है और ये है अवरोह, विच इज प म ग रे सा नि ध प म ग. तो ये अवरोह है. अगर यहाँ पे मैं अपना पैटर्न चेंज करके एक 4 डाल दिया तो ये मेरा पैटर्न बन गया 1 2 3 4 2 3 4 5, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे प ध नि सा रे गा हो गया. अगर मैं यहाँ पे ये पैटर्न डिसाइड करता हूँ कि चलो यहाँ पे मुझे सीक्वेंस में नहीं डालना है, मुझे यहाँ पे 1 3 2 4, तो ये पूरा पैटर्न उस तरीके से आपके सामने बन के आ जाएगा कि प नी ध सा, प 1 3 2 4, प नी ध सा, ध सा नी रे सा ग रे म ग प. और ये आप गा सकते हैं. कोशिश आपको ये करनी है, जब मैंने बताया गाना है तभी आपको ये पूरा नीचे देख के नहीं गाना है, तभी आपको ये सिर्फ ये आपके सामने रख के आपको कोशिश करनी है कि आप ये गा सको, और फिर ही आपको गाना है और फिर बजाने की कोशिश करनी है. तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 1 2 3, ये एक पैटर्न बन गया. और जो पैटर्न आपके सामने आप जो सोच सकते हो, जितने आप पैटर्न यहाँ पे आप सोच सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, इसको मैंने 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1, प ध नि सा रे सा नी. तो आप कोई भी एक पैटर्न बजा लीजिए. ये हो गया सारे स्वर, जो हम शुद्ध स्वर हमने जो यहाँ पे रखे हुए थे ये है. अगर हमें यही कोशिश करनी है कि अगर हमें एक सेम अलंकार अगर हमें राग भूपाली में बजाना है, तो मैंने यहाँ से नी और म निकाल दिए. तो अभी यहाँ पे प ध सा रे ग प, ध सा रे ग प है, और सिमिलरली प ग रे सा ध प, ग रे सा ध प. अभी शुरुआत में जो हम लोग ने एक जो अलंकार बजाया था, तो इसकी पैटर्न क्या है, प सा द प ध प 1 3 2 3 2 1 2. तो ये इसकी पैटर्न है, प सा द प ध रे सा द सा. या अगर मैं सिर्फ 3 2 3 2 1 2 करूँ, 3 2 3 2 1 2, और इसको डिलीट कर दिया. सो यहाँ पे सा द प ध रे सा द सा ग रे सा रे, ये बन गया. सिमिलरली ध प नि ध सा नी रे सा ग रे, तो ये 2 1 सिंपल अलंकार है. 2 1 2 1, ध प सा ध रे सा ग रे प ग ध प. ये अलंकार हो गया. यही आप हंस ध्वनि में बजा सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे प नी सा रे गा प नी सा रे गा प किया हुआ है. तो ये फाइल में आपको सिर्फ ये ऑरेंज लाइन जो यहाँ बताई हुई है, सिर्फ यहीं पे आपको चेंज करना है. आपको और कहीं किसी जगह पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारा चीज़ ऐसे बनाया हुआ है कि आप ये पैटर्न अगर यहाँ पे चेंज करोगे, और आप पैटर्न यहाँ तक बना सकते हो. सो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2,
Pani sare, pani sare, pani pani. This is just one pattern which I've just created. Now you can play around as much as possible, and you can create hundreds and thousands of Alankara, and you just have to start with one pattern. You start with one pattern, the remaining pattern will get filled up, and then you will have the notations in front of you, both Aroha and then Avroha. ये तार सब तक प तक जाएगा. एक बार तार सब तक प आ गया, उसके बाद you can stop here. Then if this zero starts coming in, then you don't need to go here. In fact, even here there is a zero, so you can't play till here. You have to play only till here. That's the only thing that you need to keep in mind, how to use this file and how to write notations here. Now आप ये एक मैंने एक फॉर्मेट बताया हुआ है. यहाँ पे जैसे मैंने सारे स्वर डाले हुए हैं, यहाँ पे भूपाली है, यहाँ पे हंसत ध्वनि है. Similarly, any raga that you want to take, you create a copy of this and just use the notations here. And whatever notations that you put here, it will have, you can just create the notations and alankaras the way you want. So ज़रूरी ये है कि आप सही बजाए. ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने अलंकार बना सकते हो या कितने अलंकार आप बजाने की कोशिश कर रहे हो. ज़रूरी ये नहीं है. ज़रूरी ये है कि अगर आप 50 अलंकार भी बजा सकते हैं, तो वो 50 अलंकार आप किस तरीके से बजा सकते हैं, क्योंकि आपकी फिंगर्स तभी इंप्रूव होगी जब भी आपके अलंकार बहुत अच्छी तरीके से आप बजा सकते हो. So I hope you like this tutorial and you are able to make the most of this video. Please download the notations file so that you can create your own Alankar notations. I hope this is helpful for you, and if you like it, please mention in the chat box. Thank you so much and keep watching my channel. Thank you.